Hello everyone, this is Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise. If you're not yet done, please subscribe the channel right now and also put on the notification bell so that whenever upload a new video, you get a notification of it. So without further ado, let's get started. Pernicious anemia is caused by the malabsorption of options are vitamin A, vitamin B12, vitamin C or vitamin A. And the correct answer is vitamin B12. Pernicious anemia is caused by the malabsorption of vitamin B12. तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जब हम whenever we consume the food and drink that have vitamin B12, then healthy specialized stomach cells makes the intrinsic factor, and this intrinsic factor bind with the vitamin B12 and it goes into the ileum where B12 enters into the bloodstream. This is the normal process. But in the anemic process, when we consume food and drink that have vitamin B12, it doesn't bind with the intrinsic factor because specialized stomach cells attacked and intrinsic factor blocked. So the B12 cannot enter into the bloodstream and it causes B12 deficiency and it causes pernicious anemia. The pernicious anemia is caused by the malabsorption of vitamin B12. Next question is, which of the following is not the prominent toxic effect of mercury? Options are xerostomia, irritability, loosened teeth or tremors. And the correct answer is xerostomia. Xerostomia is not the prominent toxic effect of mercury because xerostomia means dry mouth and it is not a toxic effect. Okay. Next question is, immediate denture should be preferably relined after. Options are 1 month and 3 month post extraction, 4 month and 7 month post extraction, 5 month and 10 month post extraction or 1 year and 2 year post extraction. And the correct answer is 4 month and 7 month post extraction. Immediate denture should be preferably relined after 4 month and 7 month post extraction. Immediate dentures are placed immediately after the tooth extraction. Due to the healing process, there are changes in the underlying bone and soft tissue, and it is common for the immediate denture to require relining. So, recommended time for relining immediate denture is typically around 4 month and 7 month post extraction to accommodate the changes in the residual ridge and provide a better fit for the denture. Next question is, the incisal edge of maxillary teeth should touch the wet dry line of lower lip while creating. Options are TH sound, F and V sound, P and V sound, S sound. तो ये आप खुद ही ट्राई करके देख सकते हैं. तो F and V, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? F and V साउंड. आप ये ट्राई करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इंसाइजल एज है मैक्सिलरी टीथ की वो टच हो रही है लोअर लिप में. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोस्टीरियर पैलेटल seal for maxillary denture. Options are, it is placed 3 mm posterior to vibrating line. It is not necessary when vibrating a complete denture on a patient with flat palate. It is not necessary if metal base is used, or it will vary in outline and depth according to the palatal form of the patient. The posterior palatal seal, it is an essential component in the construction of a maxillary denture. It is designed to create a seal at the junction between the denture and the patient's soft palate because it improves the retention and stability of the denture.
So the outline and depth of the posterior palatal seal will vary based on the individual palatal form. So the answer should be posterior palatal seal will vary in outline and depth according to the palatal form of the patient. Okay. It is crucial to customize the post-palatal seal to the specific anatomy of the patient for optimal denture performance. Okay. Next question is, a reverse 3/4 crown is most frequently fabricated for a. Options are maxillary molar, mandibular molar, mandibular premolar or maxillary premolar. So reverse 3/4 crown किसके लिए फैब्रिकेटेड होता है? तो द करेक्ट आंसर इज मैंडिबुलर मोलार. A reverse 3/4 crown is most frequently fabricated for a mandibular molar. तो इसमें क्या होता है? बक्कल सरफेस इज इंक्लूडेड द प्रिपरेशन बट इंस्टीड ऑफ लिंगुअल सरफेस. तो इसमें क्या होता है? कब ये इंडिकेट करते हैं? मैंडिबुलर मोलार विद डैमेज्ड बक्कल सरफेस एंड इंटैक्ट लिंगुअल सरफेस, or a mandibular molar with severe lingual inclination to be used as a bridge retainer. Okay, the reverse 3/4 crown is most frequently fabricated for a mandibular molar. Next question is, strain hardening or work hardening are best described as. Options are hardening of a metal at room temperature, hardening of a metal at very high temperature, softening of metal by controlled heating and cooling, softening of a metal at room temperature. तो हार्डनिंग पूछा गया है तो सी और डी ऑप्शन तो होगा नहीं, हार्डनिंग ही है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ हार्डनिंग डिफॉर्मेशन ऑफ अ मेटल एट अ रूम टेम्परेचर. तो इसमें क्या होता है? वर्क हार्डनिंग एंड स्ट्रेन हार्डनिंग में मैकेनिकल वर्किंग ऑफ अ मेटल बिलो recrystallization temperature is called cold working of a metal, and cold working is normally done at the room temperature. तो इसमें क्या होता है? cold working result increase strength and hardness of a metal and it is known as strain hardening or work hardening. Okay. Next question is, Burkitt's lymphoma is associated with. Options are herpes virus, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus or human papilloma virus. And the correct answer is Epstein-Barr virus. Burkitt lymphoma is associated with the Epstein-Barr virus. And it is also associated with the chronic co-infection with malaria. Okay. And is mostly seen in Chinese and African man. और एप्स्टीन वायरस का जो है 30 to 50 डे का इंक्यूबेशन पीरियड होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म सीन इन एड्स पेशेंट. ऑप्शंस आर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, Kaposi sarcoma. And the correct answer is Kaposi's sarcoma. मोस्ट कॉमन न्यूप्लाज्म एसोसिएटेड विद द HIV इन्फेक्शन एंड एड्स. ये आपको सीक्वेंस याद रखना है. Kaposi's sarcoma is the most common neoplasm, then non-Hodgkin lymphoma, then carcinoma of uterine cervix, and then squamous cell carcinoma of skin. Okay, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है. एंड मोस्ट कॉमन सबसे पहले क्या होगा? Kaposi's sarcoma. Next question is, the prime factor that initiate myofascial pain dysfunction syndrome is. Options are trauma, muscle spasm, periodontal disease or tumor. तो इसमें क्या होता है? Correct answer is the prime factor that initiate the myofascial pain dysfunction syndrome is trauma. Okay. तो इसमें क्या होता है? etiological factor causes micro और macro trauma to the musculoskeletal system and it leads to muscle pain and it causes hypertonicity of the muscle, then muscle fatigue and accumulation of metabolic
metabolic byproduct, and it leads to lower pain threshold. And this lower pain threshold stimulate the chemical and mechanical mediators and result myofascial pain dysfunction syndrome. Okay, understood? I tell you one more time. Etiological factor causes micro and macro trauma to the musculoskeletal system, and it leads to muscle pain. Then muscle pain causes hypertonicity of muscles, and it causes muscle fatigue, and accumulation of metabolic byproduct leads to lower pain threshold, and this lower pain threshold stimulate the chemical and mechanical mediators, and it result in the myofascial pain dysfunction syndrome. Okay, so the correct answer would be trauma, macro or micro to the musculoskeletal system. The prime factor that initiates MPDS is trauma. Next question is, which of these lesions are typically within soft tissue and may mimic inflammatory lesions of odontogenic origin? Options are median alveolar cyst, globulomaxillary cyst, nasolabial cyst and nasopalatine cyst. तो ये मैं आपको पूरा शो करती हूँ. नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट हैं ये सारे, जिसमें आपको यहाँ पे शो हो रहा है. ये बीच में है मीडियन पैलेटल सिस्ट, ये देन यहाँ पे है ग्लोबुलोमैक्सिलरी सिस्ट, नेज़ोपैलेटाइन सिस्ट सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में होता है, और ये सेंट्रल और लैटरल के बीच में ग्लोबुलोमैक्सिलरी सिस्ट होता है. ओके, तो ये हमेशा कहाँ होते हैं? एल्वियोलर. ये तीनों कहाँ पे आपको शो हो रहे हैं? हार्ड पैलेट में. ओके, एक एल्वियोलर प्रोसेस प्लस हार्ड पैलेट में है, और एक मिड लाइन में है, और बाकी हार्ड पैलेट में है. ओके, सिर्फ एक है नेज़ोलेबियल सिस्ट. नेज़ोलेबियल सिस्ट जो है ये सॉफ्ट टिश्यू में होता है. ओके, ये आपको मैंने शो किया है. तो नेज़ोलेबियल सिस्ट इट इज़ अ डेवलपमेंटल सिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द एंटीरियर म्यूकोबक्कल फोल्ड beneath the ala of nose, मतलब यहाँ अंदर होगा. ओके, most likely derived from remnant of the inferior portion of the nasolacrimal duct and also known as the nasoalveolar cyst and the Clasdet cyst. Okay, so the correct answer would be nasolabial cyst. Nasolabial cyst, which is found in the soft tissue. Okay, next question is, mass of histologically normal tissue present in the abnormal location is called. Options are teratoma, choristoma, hematoma, none of the above, and the correct answer is choristoma. A mass of histological normal tissue is an abnormal location is called choristoma. Next question is, cretinism is deficiency disease caused by the congenital absence of. Options are thyroxine, insulin, calcitonin, epinephrine, and the correct answer is thyroxine. Cretinism is a deficiency disease caused by the congenital absence of thyroxine. It may be lack of thyroxine from birth or before birth. Okay, or maybe lack of iodine in mother, and it is severe and irreparable mental defects and stunted growth and reduced growth and function of many organs in cretinism. Okay, the cretinism is a deficiency disease caused by the congenital absence of thyroxine. Next question is, the sum of mesiodistal width of a primary molar in any one quadrant is, and the correct answer is 2 to 5 mm greater than the permanent teeth that succeed them premolar. Okay, this is the correct answer. Next question is, which of the following is not the principal characteristic of attention deficit hyperactivity disorder? Options are inattention, mental retardation, hyperactivity, or
इम्पल्सिविटी। ओके, तो ये आपको सिम्टम्स मैंने बताए हुए हैं यहाँ पे। एज इनअप्रोप्रिएट इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, सिर्फ एक को नहीं है, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। देन मेंटल रिटार्डेशन is not the principal characteristic of attention deficit hyperactivity disorder. Next question is, Koplik's spots are associated with. Options are smallpox, variola, German measles, rubella, mumps, measles, rubeola. So Koplik spots are little spots inside the mouth that are highly characteristic of early phase of measles. Okay, so the correct answer would be measles, rubeola. Koplik spots are associated with the measles, and these spots look like a tiny grains of white sand and each surrounded by a red ring, and these are found especially on the buccal mucosa, okay, opposite the first and second upper molar. Next question is, at the age of 6 years, a child's head is what percentage of its adult size? Options are 30%, 50%, 80%, or 90%. And the correct answer would be 90%. At the age of 6 years of child's head is 90% of its adult size. Next question is, normal prothrombin time is. Options are less than 7 seconds plus minus 2 seconds, less than 11 seconds plus minus 2 seconds, less than 14 seconds plus minus 2 seconds, less than 25 seconds plus minus 2 seconds. तो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 9.4 to 12.5 सेकेंड, और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या होता है 25 to 37 सेकेंड, और नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा 9.4 to 12.5. सो द करेक्ट आंसर वुड बी लेस देन 14 सेकेंड प्लस माइनस 2 seconds. Okay. Next question is, in patient with leaf foot fracture, common finding is paresthesia over distribution of. The options are infraorbital nerve, inferior alveolar nerve, mylohyoid nerve और hypoglossal nerve. तो लीफोट सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों में इंफ्रा ऑर्बिटल पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है. सो द इंफ्रा ऑर्बिटल पैरेस्थीसिया आपको इसमें साइन मिल जाता है देखने को, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व. ओके, इन पेशेंट विथ लीफोट फ्रैक्चर कॉमन फाइंडिंग पैरेस्थीसिया ओवर डिस्ट्रीब्यूशन इज इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, secretion of sublingual gland is predominantly. Options are mucus, serous, mixed, or none of the above. The secretion of sublingual gland is predominantly mucus. ये डिफरेंस मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सबलिंगुअल होती हैं वो प्योरली म्यूकस होती हैं, पैरोटिड प्योरली सिरस होती हैं, और सब मैंडिबुलर जो है या बक्कल ग्लैंड जो होती हैं वो मिक्स्ड होती हैं. ओके, तो जो सबलिंगुअल ग्लैंड जो स्मॉलर होती है ऑफ द 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स. ओके, और उसमें प्रीडोमिनेंटली म्यूकस होता है. ये मैंने आपको पिक्चर शो किया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा. यहाँ पे ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ये पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, और यहाँ पे ये सबलिंगुअल ग्लैंड है. ओके, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो मिक्स्ड होती है, पैरोटिड ग्लैंड प्योरली सिरस होती है, और सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो प्योरली म्यूकस होती है. ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर कलीग्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.